morning. I'm here to see the first day first show of Laal Singh Chaddha, and I feel like I'm like the only person here in the theaters right now. It's way too early, but let's see how it goes. Hey everybody, how's it going? Today I'm going to be talking about Laal Singh Chaddha. I just saw the movie at 10 o'clock show out here in Virginia, and I have a lot to say about it. So let's get started. So I'm one of those people who were doubting this movie. I was a detractor. I am someone who grew up with Forrest Gump. मुझे लगा कि ये एक सस्ती कॉपी होगी. मुझे लगा कि इन्होंने हर एक सीन, हर एक डायलॉग कॉपी एंड पेस्ट किया होगा. लेकिन कैन आई जस्ट से कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत प्रूव हुई हूँ. मुझे फॉरेस्ट गंप जुबानी याद है. एवरी सीन, एवरी डायलॉग, एवरी कैरेक्टर. एंड मुझे उसकी याद बिल्कुल नहीं आई इस मूवी को देखते हुए. आई थिंक इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि चलो हाँ इन्होंने एडेप्ट किया है फॉरेस्ट गंप से, but that is just it. Only adaptation. The movie is uniquely Indian. यहाँ Indian historical events, cultural events, religious events यहाँ डाले हैं. Indian सड़कें, Indian लोग, just the Indian family dynamic. यहाँ सब Indian है. जो इस movie का screenwriter है अतुल कुलकर्णी, उन्होंने इतनी like wholesome and livable and believable दुनिया weave की है ना लाल सिंह चड्ढा की, कि हमें weird नहीं लगता कि ये क्या से क्या हो रहा है. लाल सिंह चड्ढा का क्या मोटिव है इस दुनिया में, उसकी जगह कहाँ है इस दुनिया में, सब कुछ हमें पता है. उसके relationships जो हैं, family, friends, army service, सब हमें साफ साफ दिखता है. And we realize and see why he does what he does, and उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है. I think इस मूवी की cinematography इतनी beautiful थी that I felt I was there. The mountains of Leh Ladakh, the Khet and Pind of Punjab, the oceans, the galiyan, it was magnificent. यहाँ हर एक Indian region दिख रहा था. The differences, the nuances were great. And the direction, the way each scene played out, the way the movie progressed, मैं कुछ भी नहीं change चाहती इस movie में. I think it was perfect. And what was the best part of this movie? For me, it started right from the beginning. जहाँ beginning credits का ये song चलता है ना, the song with the feathers journey, how the feathers blowing this way and that is so whimsical. It shows how this movie is going to be. It's a tale of this man, Laal Singh Chaddha, और उसकी life में क्या क्या होता है, the ups and downs he goes through, how life throws curveball at him, but he, catches them and then he goes on forth. I love the introduction of Laal Singh Chaddha. Forrest Gump में Tom Hanks is sitting and waiting for a bus, right? He's at a bus stop and passengers come and go and he's telling his story with a box of chocolates. Yahan pe, Laal Singh Chaddha is at a railway station. He's in a car. He's in his seat. A passenger is sitting opposite him and he has a dabba. And in that dabba, if they were really making a copy, there would have been some kind of mithai, laddu, barfi. But they didn't do that. When I watched the trailer and I heard this dialogue and saw this scene, I thought it was cringy. I was like, Golgappe, really? Zindagi Golgappe jidda hondi hai? I was like, no, it's a box of chocolates, not Golgappe. Lekin can I say, after watching this movie, life is like a box of Golgappe, right? Ab jitna bhi khao, aapka peet bhar jayega, niyat nahi bharegi, right? Man nahi bharega. You want some more and more and more. And also, if you think about it, Golgappe, it's filled with different textures and flavors. And, that is what life is like. Kahin se koi aayega, kahin se koi jayega. We learn lessons. We face hardships. We reach our goals. Sometimes we think we have a certain set of dreams, lekin wo dreams nahi pure hote, lekin naye dreams aa jate hain, wo pure hum karte hain. So mujhe bahut pasand laga ye jo metaphor unhone dala tha. Mujhe Aamir Khan बहुत अच्छा लगा. His character was so charming, so endearing. जो बातें Forrest Gump की थी जो हमें पसंद थी ना, the way he talks, his outlook on life, positivity, जो simplistic view उसके हो सकते हैं, लेकिन life को वो समझता है, life को जीता है.
He's not bogged down by the stresses of life, the negativity, the animosity. Yeah, नहीं है फॉरेस्ट गम के कैरेक्टर में एंड यहाँ लाल सिंह चड्ढा के कैरेक्टर में भी नहीं है. आई लव द वे आमिर खान टॉक्ड इन दिस मूवी. जब मैंने ये ट्रेलर देखा था मुझे वो भी पसंद नहीं आ रहा था. मैंने कहा ये क्या टूटी फूटी पंजाबी बोल रहा है, लेकिन इट वाज सो इंडीयरिंग जैसे वो बोलता था. उसका आहो आहो, हाँ जी, हेलो जी, मुझे बहुत पसंद था. आई थिंक उसकी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे. यस, थोड़ी-थोड़ी याद पीके की आती थी, थोड़ी-थोड़ी याद एक जो ट्विन था धूम 3 में जो आमिर खान ने प्ले किया था, आई थिंक उसकी भी थोड़ी झलक थी इसमें. मे बी थ्री इडियट्स का थोड़ा था, हिज एक्सप्रेशंस स्पेशली जब वो उसका कॉलेज सीक्वेंस दिखाते हैं. बट आई फील कि ही डिड सो मच विद एक्सप्रेशंस. यस, आँखें थोड़ी खुली-खुली थी उसकी, लेकिन there was a lot of emotion in those eyes. There were a lot of nuances in his mannerism. His haha. I loved it. मुझे लगता है कि आमिर खान के अलावा ये मूवी कोई कर नहीं सकता था. I think he did a fab job. I think उसकी dedication and जो passion है ना movies की तरफ यहाँ बिल्कुल दिखती है. Maybe I'm in the afterglow of watching this movie, but guys, I grew up with Forrest Gump, and I'm telling you, I loved Laal Singh Chaddha. I loved Aamir Khan. मुझे लगता है this is one of his best performances. Yes. And I didn't think that was going to be the case at all. मैंने ये movie बिल्कुल write off की हुई थी. And then I saw Aamir Khan on Coffee with Karan and मुझे लगा no, मुझे ये movie देखनी है. क्योंकि कोई भी movie हम बिना देखे कैसे judge कर सकते हैं कि ये movie copy होगी, ये movie अच्छी नहीं होगी, आमिर खान अच्छा नहीं लग रहा. How do we know without watching it for ourselves? And मैंने देख के ये opinion बनाया है कि I can watch this movie again and again. मैंने इस movie के गाने नहीं सुने थे, लेकिन हर एक गाना जो आता है movie में, it seems it should be there. The placement is beautiful. इस movie के dialogues बहुत अच्छे हैं, बहुत nuanced है. वो पंजाबी टच है मोना सिंह में जो आमिर खान की मॉम प्ले करती है. And just like Sally Fields in Forrest Gump, यहाँ मोना सिंह भी एक protective, strong woman है, mother है, जो अपने बच्चे को बताती है he can do anything in this life and no one is above him. And ये सीख लाल को शुरू-शुरू में मिल जाती है कि लाल तू भी सब बच्चों की तरह है, तू भी स्कूल में जाएगा, तू भी पढ़ेगा, तू भी काम करेगा, तू भी अपनी लाइफ जिएगा जैसे हर एक इंसान जीता है. सो आई रियली लव दैट. एंड जो वो बच्चा था ना जो छोटा लाल सिंह चड्ढा बना था, ही वाज सो क्यूट एंड ही लुक्ड लाइक जूनियर आमिर खान. सो दैट वाज रियली नाइस. मुझे लगता है कि जो रूपा का कैरेक्टर था जो करीना कपूर ने प्ले किया, व्हिच इज सपोज्ड टू बी जेनी फ्रॉम द ओरिजिनल, आई थिंक शी वाज ग्रेट. मुझे लगता है कि करीना कपूर भी इस रोल में बिल्कुल फिट थी. And I think no one else could do this role besides her because there's a certain chemistry connection that Aamir and Kareena share in real life, and you can see that translate on screen. मुझे इनका friendship बहुत अच्छा लगा. The way she just accepts him कि वो जैसा भी है अच्छा है, and the way he accepts her, the way he loves her from childhood. I think it was endearing. And मुझे सबसे अच्छी बात ये रूपा की लगी कि she was a strong character. Yes, उसकी life में बहुत ups and downs होते हैं. I don't want to give any spoilers, but there's a lot of things that happens in her life, but she still is able to work past them in her own way. Now, will everyone follow suit? No, but जो उसका character था, उसने अच्छी तरह से निभाया. And I love the arc she had towards the end. One of the most endearing roles जो Forrest Gump में था, that was Bubba, जो Forrest का friend बनता है in the military when they go to Vietnam. यहाँ पे जब लाल सिंह चड्ढा आर्मी ज्वाइन करता है to go and eventually fight in Kargil the war, यहाँ पे उसको मिलता है बाला जो नागा चैतन्य ने रोल निभाया है उसका. And I think Naga Chaitanya was very cute, very endearing. I love कि Atul Kulkarni has turned this classically American story into an Indian one. Waha Baba was involved in the shrimp business. His purvaj were shrimp harvesters. And so यहाँ पे चड्डी बनियान हमने कितनी बार सुना था इस डायलॉग को पूरी मूवी में. आई लव्ड इट. वो जो पूरा मोनोलॉग होता है
Naga Chaitanya ka bar bar he's talking about the size and the shape and the use of chaddi banyan and how his parents served like military officers that even the Angrez and ye yahan apni company kholna chahta hai. I really love that. In the original jo Captain Dan ka character tha is not in this movie per se. मुझे शुरू-शुरू में लगा कि जो उसको वो drill sergeant मिलता है आमिर को वो शायद होगा because he was also cranky and strict, but really funny. Captain Dan की जो replacement है ना, that's in the form of this Pakistani enemy terrorist, and he is Manav Vij, and he plays Muhammad, and Laal Singh Chaddha calls him Veere, okay, or Bhai. And it shows the innocence that Aamir has कि जब वो battlefield में है, वो he wants to save anyone's life in front of him. He doesn't like killing, and so he saves him, not knowing who he is. He doesn't even pay attention to that. So we see the journey that this Muhammad's character goes through from being taught, about the enemy country, enemy people, to being someone who grows appreciative of this stranger who approaches him and saves his life and gives him a new chance at life. तो मुझे वो भी अच्छा लगा. जैसे मैंने कहा ये मूवी यूनिकली इंडियन है. यहाँ पे जैसे मैं खुश होती थी ना फॉरेस्ट गंप देख के कि हमें वहाँ एल्विस की झलकी मिलती है या डिफरेंट पॉप रेफरेंसेस मिलते हैं लाइक shit happens basically दिखाया था उस मूवी में कि Forrest Gump came up with this famous term. पर यहाँ पे दिखाया है जैसे बाबरी मस्जिद में जो इश्यूज हुए हैं हरमिंदर साहब लाइक गोल्डन टेम्पल में जो दंगे हुए थे अराउंड गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर anti-Sikh riots, Indira Gandhi putting an end to the emergency and then subsequently her assassination and the impact it has on the Sikh community. It transported me into his world. उसकी लाइफ में क्या क्या होता है periphery में and कैसे उसकी माँ उसको shelter करती है. The scene where Mona Singh has to cut his hair was brutal. It was so sad to see her sadness and what led to this. And I think the best part of this movie is कि ये preachy नहीं है. There's no lectures. There's no one standing at a podium and saying कि हम सबको ना एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए. हम सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. हर धर्म deserves respect. People should love each other and care about each other, irrespective कि आप कौन से religion से हो, क्या आपकी जाति है, whatever. I love लाल सिंह चड्ढा जो कहता है जब मोहम्मद भाई उसको पूछता है ना कि मैंने तुझे कभी इबादत करते हुए नहीं देखा, पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, वो क्यों? तो वो कहता कि मेरी मॉम कहती थी कि रिलीजन की वजह से मलेरिया फैलता है देश में. And this metaphor for malaria is basically the riots, the violence, the hatred, the bloodshed that happens, the world over, forget India. So I love that he says कि भगवान हमारे अंदर बसते हैं, right? Everyone has God inside him or her, and we don't need to like show anyone just for the sake of showing कि हम इस धर्म के हैं या उस धर्म के हैं. We respect everyone, and I love that message. इंडिया का यही USP है कि इतने सारे लोग तरह तरह की भाषा तरह तरह का रहन सहन religions, they all live together, and I feel like this movie just depicts it beautifully. एक तो इतना अच्छा scene था जब आमिर खान he's standing in front of a mirror and वो पग अपनी बांध रहा है and he does it so beautifully कि ऐसा लग रहा था कि आमिर खान ये हर रोज अपनी लाइफ में करता होगा. इतना अच्छे ढंग से उसने किया ये सब. And also जो उन्होंने wedding दिखाई थी Sikh wedding, I felt like that was also very realistic. नहीं तो Bollywood movies में इतना realistic दिखाते नहीं है Sikh weddings को. So I feel like that was really well done. So guys, I would talk about this movie on and on and on, लेकिन फिर spoilers आ जाने और मैं spoilers देना नहीं चाहती because although I saw the first day first show, there's many of you guys out there that haven't seen it. If you guys take anything out of this review, it's this, that each and every movie deserves a shot. पहले ही अपने मन में बना के नहीं रखना चाहिए कि ये movie अच्छी नहीं होनी, flop होगी, बेकार लग रही है, because जब तक आप देखोगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा. And I'm so glad कि I got over my own bias, क्योंकि मैं bias के साथ गई थी कि मुझे अच्छी नहीं लगनी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इस मूवी में. मुझे लग रहा था कि फॉरेस्ट गंप को क्यों इन्होंने छुआ, like why are they touching this classic movie, this iconic role of Tom Hanks जो हम आज तक नहीं भूले, ये क्यों इस मूवी को reproduce कर रहे हैं, adapt कर रहे हैं. But you know what, I love that they did that because yes, फॉरेस्ट गंप की झलकियां हैं, पर ये लाल सिंह चड्ढा है,
this is an Indian take, an Indian story, an Indian movie with lots of Indian flavor. And I feel like Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya, Mona Singh, and Manav Vij all did justice to their characters. I think that yes, iconic scenes हैं उस movie के जो यहाँ replicate हुए हैं. एक तो Run Forrest Run, Bhag Lal Bhag, where he is running with abandon and his leg braces come off. That is obviously taken from there. His sports journey, his military service, his working as a businessman in a company. Yes, all that stuff is there. I'm not gonna say that it's not. But all those things have an Indian touch to it, an Indian flavor to it. And I think Aamir Khan ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी को संभाला है, इस कैरेक्टर को निभाया है. And I hope that people go and watch this movie because it deserves a watch. So that's it for me, guys. Let me know what you think. Up comment section में ज़रूर बताना if you agreed with what I said. If you watched the movie, what did you think about it? And also, आपको Forrest Gump के comparison ये movie कैसी लगी? Also, follow me on social media, Instagram or Twitter pe mein hu Pari602. And then also like, share, comment, and subscribe. And let me know what else you want me to react to and to review to. And I'll see you later. Bye.